Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing all well. So in this video we will be covering our last use of the may, that is may and might we use for the possibility purpose. तो may के जो दो uses हैं we have probably covered in the previous two videos. You can go and check those out if you have not watched that yet. ठीक है. So the last use we will be covering may और might possibility के लिए इस्तेमाल किया जाता है. वी यूज़ मे और माइट टू से दैट समथिंग इज़ पॉसिबल. हम लोग मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों को कहना होता है कि कुछ पॉसिबल है, यानी कि शायद आज जो है मेरी बहन आ जाए, शायद आज हम लोग बाज़ार जाएं. ठीक है. सो देयर आर सम पॉसिबिलिटीज़ इन दीज सेंटेंसेस कि शायद मैं काम करूं या ना करूं. वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि हम लोग वी विल 100% डू दिस वर्क, बट वी हैव जस्ट द पॉसिबिलिटीज़ के वी डू दिस वर्क. ठीक है. आइदर मे और माइट कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस. या तो हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं या तो हम लोग माइट का इस्तेमाल करते हैं. we cannot use in a sentence we cannot use both may or might in a sentence. ठीक है. जैसे कि आई वॉन्ट टू मेक अ सेंटेंस कि शायद मैं अपनी दोस्त के घर आज जाऊँ. सो मैं सेंटेंस बनाऊँगी आई माइट गो टुडे टू माई फ्रेंड्स हाउस. यहाँ पर मैंने माइट का इस्तेमाल किया है. मैंने दोनों का नहीं लगाया कि आई मे माइट गो टू माई फ्रेंड्स हाउस. मैं या तो मे लगाऊंगी या तो आई विल यूज़ माइट. ठीक है. बोथ कैन बी यूज्ड फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अब ये जो दोनों मॉडल वर्ब जो हैं मे और माइट, ये जो इस्तेमाल किया जाता है वो फ्यूचर के लिए भी और प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि प्रेजेंट के लिए, हालिया के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आज जो है मेरी दोस्त मेरे लिए आज मैं अपनी दोस्त के लिए केक बना रही हूँ. सो दिस इज़ द कंटिन्यूस वे ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. कि मैं बना रही हूँ. आई विल टीच यू दिस एज वेल आगे जाकर. तो हम लोग के लिए ये प्रेजेंट में भी यूज़ किया जाता है शायद के सेंस, और हम लोग फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि आज शायद मैं यहाँ जाऊँ, या आज शायद मैं मार्केट जाऊँ, या आज जो है शायद मैं मिल्क शेक बनाऊँ अपने लिए. ठीक है. और फ्यूचर के सेंस में किस तरह से कि शायद आज मेरी फ्रेंड मेरे लिए बेकरी से बिस्किट्स लेकर आएगी. शायद मैं उसको इस दफ़ा बर्थडे विश नहीं करूँगी. ठीक है. या फिर ना करूँ. सो मीन्स ये जो शायद है ना, इसमें प्रेजेंट सेंस भी हो रहा होता है एंड द फ्यूचर सेंस भी हो रहा होता है, क्योंकि दैट इज़ द पॉसिबिलिटी. वी डू नॉट नो व्हाट विल हैपन. वी आर जस्ट गेसिंग दैट what are we supposed to do in the coming step. ठीक है. in the upcoming time what we are supposed to do. we are just giving our possibilities कि what can I do or what can I not do. ठीक है. we are not sure about that definitely we will be doing. then we have the examples of may or might. it may might be a bomb. ठीक है. ये शायद एक बॉम्ब हो. सो आई हैव एडेड द स्लैश इन द बिटवीन ऑफ मे एंड माइट. तो या तो मे यूज़ होगा या तो माइट यूज़ होगा. तो ये प्रेजेंट सेंटेंस है कि ये शायद बॉम्ब हो. लाइक let's have an example कि somebody sends you a gift or a box which is very large in size, and you just go and try to open that. So when you try to open that, another friend says to you that it might be a bomb or it may be a bomb. ठीक है. So that is the present sentence we do use. ठीक है. So these are the sentences we use in the present. She might be in the office. वो शायद ऑफिस में हो. So that is also in the office. Like let me give you another situation of that. कि let's suppose my mother calls me and she says to me that Sarah is not ringing up my call. And why is she not ringing up my call? Is she angry to me? My mother is asking me on the call. ठीक है. So what I'll be responding to her that she might be in the office. क्या पता वो ऑफिस में हो, क्या पता शायद वो ऑफिस में हो. So that is the present sentence. ठीक है. They may bat it. ठीक है. That is also the present sentence. Let me give you another situation of that. कि let's suppose there are two boys. They both have two chocolates. ठीक है. And they betted one of them
say that let we bet it. If any of us win this match, we will give our we will give my two chocolates to you and you will give me your two chocolates to me if any one of us win. So they may bet it. वो शायद इसको शर्त रखें, वो शायद इस पर शर्त रखें. So that it means basically. So let's we move forward. I may go to disco tomorrow. मैं शायद कल डिस्को पर जाऊंगी, लाइक इन सम पार्टी. सो दैट इज़ वी आर यूजिंग इन द सेंस ऑफ फ्यूचर. शी माइट बेक पास्ता दिस फ्राइडे. वो शायद पास्ता बनाएगी इस फ्राइडे. सो दैट इज़ ऑल्सो इन द सेंस ऑफ फ्यूचर. इट इज़ इंडिकेटिंग कि इस फ्राइडे को वो ये करेगी, 6 बजे वो शायद ये काम करे. सो देर आर सो मैनी कपल ऑफ सेंटेंसेज यू कैन मेक ऑफ योर ओन. दे मे गेट मैरिड बाय नेक्स्ट ईयर. ठीक है, वो शायद अगले साल तक शादी कर लें. They might purchase a new shop or a new hotel near the Murray City. ठीक है, so there are so many sentences. You can also make yourself or the future represent the present purpose. ठीक है, try to make out, try to explore out your own self, like try to find out the verbs and try to make the sentences of those verbs, so that it will definitely increase your English, it will increase your writing. I will just simply suggest you, if you are not sincere yourself, nothing can be done. ठीक है, so you have to first be sincere with yourself, so everything can be happen. So there is definitely the possibility that you might win to learn English. Okay, so the next we have the negative sentence of may might. Just the not will come after may. ठीक है, Daniel may not get the job. Daniel को शायद जॉब ना मिले. Tom might not be in the hotel. Tom शायद होटल में ना हो. I might not be done by this work till morning. मैं शायद इस काम से सुबह तक फारिग ना हो सकूँ. So there is the possibility. ठीक है, the formula I will write down in the comment section below. ठीक है, और in the description anywhere in which I'll be comfortable. ठीक है, I will put down the formula so that you can see that easily. Next we have the use of may might for continuous sentences, as I talked about in the starting of the video. Continuous में कैसे होता है कि शायद मैं ये वाला काम कर रही हूँ, शायद मैं अपनी जॉब या अपना बिजनेस सेटल कर रही हूँ अगले 3 सालों बाद. सो दीज आर द सेंटेंसेस. ठीक है, व्हेन वी वांट टू मेक कंटिन्यूस सेंटेंसेस फॉर मे और माइट, सो वी यूज़ बी प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर मे माइट. सिंपल इज़ दैट कि फार्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है सब्जेक्ट लगाते हैं. सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को लगाना है मे या माइट. इन दोनों में से एनी वन ऑफ दैम यू कैन चूज़ योर सेल्फ कि आप लोग को कौन सा अच्छा लग रहा है. आई यूजुअली यूज़ माइट. ठीक है, तो आप लोग को कोई सा भी जोन सा भी इनमें से अच्छा लगे, यू हैव टू चूज़. और फिर आप लोगों को लाइक सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी लगाना है. उसके बाद बी लगाना है एंड देन द ing और द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, कैचिंग, ड्राइविंग, स्विमिंग, स्वीपिंग, डस्टिंग, making, drawing. These are all the ing form. These are the most easiest form of the verbs. Well, then हम लोग simple object लगाएंगे. The man might be watching us. The man is the subject, might. Be लगाएंगे हम लोग might के बाद and then watching is the fourth form of the verb and the ing form of the verb and then the object. My coworker may be working till late night. मेरा coworker शायद रात को देर तक काम कर रहा हो. Her classmate might not be preparing herself for tomorrow exam. मेरा classmate शायद अपने आप को prepare ना कर रहा हो for tomorrow's exam. So these are the examples I have given to you. You can make sentences yourself, or I will just suggest you कि आप just keep practicing yourself. It will increase your writing power. आप लोग just start writing. ठीक है, just take out some verbs from the internet, google it and just start making the sentences. ठीक है, और must tell me in the comment section below so that I can see you that either you are gaining something from me or not. ठीक है, so till then Allah Hafiz until my new video comes up. Thank you for watching.